Hello everyone. Today we will see about the mechanism of the drug absorption. So there are the three methods for the drug absorption. Three mechanisms. First is the transcellular transport. Second is paracellular transport. Third is vascular transport. Uh, Transcellular transport, it is also known as intracellular transport, and in this the passage of the drug across the GI epithelium. Paracellular transport, it is also known as intercellular transport. In this the passage of drug between the GI epithelium. Next, in this we will see about transcellular transport. It is further classified into the two. First is the passive transport process, which is further divided into the four. First is passive diffusion, pore transport, ion pair transport, facilitated or mediated diffusion. Second in this is the active transport process. It includes the primary active transport and secondary active transport. The secondary active transport include the symport and antipode. And paracellular transport, it is divided into two. First is the permeation through tight junction of epithelial cells. In this the example is insulin and cardiac glycoside. This process occur through the openings which are little larger than the aqueous pores. Persorption, it is the permeation of drug through temporary openings, and it is found by shading of two neighboring epithelial cells into lumen. Vascular or corpuscular transport, it is also known as endocytosis. It is a energy dependent process. In this the transport of substance within vesicles into the cells. It is of endocytosis is again divided into two. First is the pinocytosis and phagocytosis. Pinocytosis is nothing but the cell drinking, and phagocytosis is cell eating. In the case of the passive transfer, there is a requirement of energy is not needed, and it only require the molecular motion or Brownian motion is required. And we will see here the transcellular transport is also known as intracellular transport, and it includes the three steps. First is the permeation of GI epithelial cell membrane, a lipoidal barrier. It is a major obstacle of GI. Then second is movement across the intracellular space, cytosol. Permeation of lateral or basolateral membrane, it is of secondary importance. Passive transport process, no energy is required other than molecular motion, that is Brownian motion. Passive diffusion, here the non-ionic, it involve mainly in the non-ionic diffusion, and the majority, or we can say majorly, the 90% of more than 90% of the drugs are absorbed. Driving force which is involved is electrochemical or concentration gradient. Passive diffusion is defined as the difference in the drug concentration on either side of the membrane. During passive diffusion, the drug present in the aqueous solution at the absorption site partition and dissolves in the lipid material of the membrane, and finally leaves it by dissolving again in an aqueous medium, this time at the inside of the membrane. फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, ड्रग जो है डिफ्यूज़ होता है हाई रीजन से लो रीजन है जब तक इक्विलिब्रियम जो है अचीव ना हो. और इसमें क्या होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट को. और ये इसका इक्वेशन है, दैट इज़ a dq/dt इक्वल टू dA/km/w/h, and in the bracket it is CGIT minus C. dq/dt is the rate of diffusion, it is in the amount per time, and D is the diffusion coefficient of the drug through the membrane, it is in the area per time. A is the surface area of the absorbing membrane for drug diffusion area. Km/w, partition coefficient of the drug between lipoidal membrane and aqueous GI fluids, no units. CGIT minus C, that is the difference in the concentration of drug in GI fluids and plasma. H is the thickness of the membrane. Characteristics, downhill transport,
Then downhill transport means here the drugs move down the concentration gradient, so it is said to be as the downhill transport. Second is it is energy independent and non-saturable. Next is the rate of diffusion is directly proportional to the concentration gradient between the GI fluids and GI fluids and the blood compartments. Greater the area, lesser the thickness. Greater the area, lesser the thickness of the membrane, the faster will be the diffusion, and if the diffusion is faster, then the drug will be rapidly get absorbed from the intestine as rather than that of the stomach. शॉर्ट डिस्टेंस होगा तो रैपिड प्रोसेस होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस होगा तो एब्जॉर्प्शन जो होगा ड्रग का वो स्लो प्रोसेस हो जाएगा. इक्विलिब्रियम अटेंड when the concentration on either side of membrane becomes equal. Rate of इसमें क्या होता है, the drugs which can exist in both ionized and unionized forms approach equilibrium primarily by the transfer of unionized species. The rate of unionized species is 3 to 4 times the rate of ionized drugs. Next is the greater the membrane water partition coefficient of drug, the faster will be the absorption. As we know that the membrane is lipoidal in nature, so the lipophilic drug will easily get diffuse and at a faster rate, and it can easily get solubilized in the lipid layer of the membrane. Drug diffuses rapidly when the volume of the GI fluid is low, and dilution conversely, when there is dilution of the GI fluids decreases, dilution of GI fluid, it will decrease the drug concentration in the fluids, that is CGIT, and lower the concentration gradient. And this phenomena is useful in the case of the in treating the cases of oral overdoses or poisoning. In this, next is the generally the drugs which are having molecular weight between 100 to 400 daltons are effectively get absorbed, but there is one exceptional case. For example, cyclosporine A, it is having the molecular weight of 1200. It get absorbed orally better than any other peptide. Initially, when the drug is ingested, CGIT is greater than C. A large concentration gradient exists, thereby acting as the driving force for absorption. As a large equilibrium approaches, the drug diffusion should stop, and consequently, a large fraction of drug remain unabsorbed. But this is not the case. Once passively absorbed drugs will enter the blood, and it will get rapidly swept away and distributed to the large volume of the body fluids. Hence, the concentration of drug at the absorption site, we can say that the CGIT is maintained greater as than that of the concentration of drug in the plasma. So this is the sink condition. In the usual condition, the absorption, we can say here the dA, K, M by W and H, these are constant, and it is replaced by the constant P, which is said to be as permeability coefficient. Here the permeability means the ability of the particular drug, to penetrate, or we can say diffuse through the membrane. C, we know that the C, that is the concentration of plasma is small than that of the concentration of drug in this GIT. So it is simplified in this equation, that is dq by dt equal to p CGIT. It generally follows the first order process, so the passive diffusion follow the first order kinetics. The rate in this, the rate of drug absorption is usually more rapid as compared to the rate of elimination. Here it is the passive diffusion rate of different types of molecules is shown.
First is the hydrophobic molecules. We know that hydrophobic means water hating, and it is also said to be as lipophilic. So the lipophilic is easily get penetrate, highly penetrate, because it is a lipoidal membrane. So in the lipoidal membrane, through the lipoidal membrane it will get easily penetrate. Next is the small uncharged polar molecules. So these are also these can also get penetrate. uh, then large uncharged polar molecules, it also get penetrate, but to a lesser extent as compared to the small uncharged polar molecules. And the ions are not able to get penetrate through the lipoidal membrane. Next is the pore transport. It is also known as the convective transport, bulk flow और फिल्ट्रेशन. इसमें क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मॉलिक्यूल्स का प्रोटीन चैनल्स के थ्रू. मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल्स में. और कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसमें. ड्राइविंग फोर्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ऑस्मेटिक डिफरेंस अक्रॉस दी मेम्ब्रेन. और इसमें क्या होता है, वाटर फ्लक्स जो प्रमोट करता है ट्रांसपोर्ट, उसे हम कहते हैं सॉल्वेंट ड्रैग. The process is important. The process is important in the absorption of low molecular weight, which is having low molecular weight less than the 100 daltons, and low molecular size and generally water soluble drugs through the narrow aqueous filled channel or pores in the membrane. For example, we can say urea, water, sugar. Chain-like or linear compounds of molecular weight up to 400 daltons can be absorbed by filtration. In this, it is important in the renal excretion, that is removal of the drug from the cerebrospinal fluid and entry of drug into the liver. Next is the ion pair transport. In this, the compounds such as, like we can say, quaternary ammonium compound and sulfonic acid, these compound can easily get ionized under all pH conditions, that is the ion pair transport. Despite of their low oil in water partition coefficient values, such agents can get penetrate the membrane by forming a reversible neutral complex with the endogenous ions of the GIT, like we can say mucin. Such neutral complexes have both required lipophilicity as well as aqueous solubility for passive diffusion. Propanol, a basic drug that forms an ion pair with oleic acid. So यहाँ पे क्या है, GI lumen and membrane and blood. यहाँ पे हमने पहले ही बताया कि ये रिवर्सिबल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. कैटायनिक और एंडोजीनियस एनायन न्यूट्रल रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये मेम्ब्रेन से ब्लड में जाएगा, और यहाँ पे ब्लड में जाके डिसोसिएशन होगा कॉम्प्लेक्स का, और फ्री ड्रग फॉर्म होगा. ऐसे ये ब्लड में रीच होता है. देन नेक्स्ट इज दी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट. ये क्या होता है, स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है विद विच एसेंशियल विदाउट विच ये एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है विदाउट विच द एसेंशियल वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स, लाइक वी कैन से मोनोसेकेराइड्स, अमाइनो एसिड्स, vitamins will be poorly absorbed. It bind reversibly or non-covalently with solute molecules to be transported. मतलब ये जो है बाइंड करेगा solute molecule के साथ, कैरियर जो है बाइंड करेगा solute molecule के साथ, और ये जो है फॉर्म करेगा कैरियर solute complex, और ये जो है क्रॉस करेगा मेम्ब्रेन. वहाँ पे जाके ये डिसोसिएट हो जाएगा और डिस्चार्ज करेगा क्या, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को. और फिर जो कैरियर है फिर उसके ओरिजिनल साइड पे आएगा, तब उसकी जो साइकिल है कंप्लीट हो जाएगी, और ये एक्सेप्ट करेगा एक फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ सोल्यूट को. हेयर इट इज़ द कैरियर सोल्यूट कॉम्प्लेक्स जो है traverses across the membrane to other side where it dissociates and discharges the solute molecules. The carrier then return to its original site to complete the cycle by accepting a fresh molecule of solute. Characteristics: uncharged non-polar outer surface होता है इसमें. A carrier protein which is always having a uncharged outer surface. Uncharged means which is non-polar, so due to which it is easily get soluble within the lipid membrane.
Next is it is unidirectional, means they work with the same efficiency in both the direction. These carriers are unidirectional. These are structure specific. It means that the carriers have special affinity for and transfer of drug of a specific chemical structure only. Next is the system. Next is capacity limited, therefore adequately described by mixed order kinetics, which is also called as Michaelis-Menten saturation or non-linear kinetics. Example is vitamin B1 and vitamin B2 and B12. यहाँ पे मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें जो है वो सबसे पहले ना फर्स्ट ऑर्डर एट सब सेचुरेशन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन पे वो फर्स्ट ऑर्डर होता है, और बाद में फिर वो ज़ीरो ऑर्डर हो जाता है जब वो अबव सेचुरेशन लेवल होता है. देन नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन विंडो देखते हैं. ये एग्जाम्पल देखते हैं. एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंटीनियो प्लास्टिक एजेंट्स लाइक 5-fluorouracil, 5-bromouracil विच सर्व एज फॉल्स न्यूट्रिएंट्स. यहाँ पे ग्राफ दे रखा है. जो पैसिव डिफ्यूजन है वो फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट होता है. रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग एट दी एब्जॉर्प्शन साइट, ये एक्स एक्सिस पे है. एरिया इन विच द कैरियर सिस्टम इज़ मोर डेंस, उसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन विंडो. और जो ड्रग्स जो एब्जॉर्ब्ड होते हैं इस एरिया में उसे हम कहते हैं पुअर कैंडिडेट ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज फॉर्मुलेशन. फैसिलिटेड डिफ्यूजन क्या होता है? इट इज़ वेरी लेस इम्पोर्टेंट. इट इज़ ए वेरी लेस इम्पोर्टेंट then it is less important in the absorption of the drugs than downhill transport. The drug passage, the drug move down the concentration gradient, so it is downhill transport. Driving force involved is concentration gradient, no energy expenditure. Example is the entry of glucose into RBC. ग्लूकोज की एंट्री होती है RBC में. इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन का B1 एंड B2. देन GI एब्जॉर्प्शन होता है. एक क्लासिक एग्जांपल इसका GI एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का. एन इंट्रेंसिक प्रोड्यूस्ड, एन इंट्रेंसिक फैक्टर जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है हाँ गैस्ट्रिक पैराइटल से, जो फॉर्म करता है विटामिन B12, फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स विद द विटामिन B12 के साथ, और ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस दी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ ए कैरियर बाय ए कैरियर सिस्टम. GI ल्यूमेन है, यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये ब्लड है. यहाँ पे क्या है विटामिन B12 है, ये इंट्रेंसिक फैक्टर है, और ये जो है विटामिन B12 इंट्रेंसिक फैक्टर कैरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा. फिर ये जो कैरियर होता है मेम्ब्रेन में वो काम करेगा कि जाके वो ब्लड में उसे ट्रांसपोर्ट करे, और वहाँ पे डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स होगा और उससे फ्री विटामिन B12 रिलीज़ होगा ब्लड में. एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इसमें क्या है डायरेक्ट हम लोग ATP का यूज़ करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में. प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? ट्रांसफर होता है. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओनली वन आयन और मॉलिक्यूल ओनली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिपोर्टर. फॉर एग्जाम्पल एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज. आयन ट्रांसपोर्टर is a primary active transport is divided into the two. First is the ion transporter. Example is ATP driven ion pumps होता है. 2 टाइप्स में हमने देखा. it plays important role in intestinal absorption of drugs. इसके 2 टाइप्स होते हैं. ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्टर होता है प्रेवास्टैटिन एंड एटोरोवास्टैटिन. ऑर्गेनिक कैटायन ट्रांसपोर्ट होता है डाइफेन हाइड्रामाइन होता है. ABC ATP बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर होता है. फॉर एग्जांपल पीइंग ग्लाइकोप्रोटीन, और जिसे हम लोग मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस प्रोटीन भी कहते हैं. इसमें क्या होता है ना, द लेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग द हाइड्रोफोबिक ड्रग्स स्पेशली इन द केस ऑफ द स्पेशली द anti-cancer drugs out of the cell. The presence of large quantity of the proteins which makes the cell resistant to a variety of the drugs which are used in the cancer chemotherapy. So this phenomena is known as the multi-drug resistance, and so this is the reason we say that P-glycoprotein is also known as the multi-drug resistance protein. ABC transporters present in the brain capillaries pump a wide range of drugs out of brain.
सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देर इज़ नो डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ATP। इसमें क्या होता है, दो टाइप्स होते हैं, एक सिम्पोर्ट होता है, एंटीपोर्ट होता है। सिम्पोर्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगे। एंटीपोर्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ बोथ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब डायग्राम में शोन है वो देखते हैं। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अप हिल ट्रांसपोर्ट होता है इसमें, देन प्रोसेस फास्टर होती है एज कम्पेयर टू द पैसिव डिफ्यूजन। एब्जॉर्प्शन ऑफ 5 फ्लोरोयूरेसिल एंड 5 ब्रोमोयूरेसिल थ्रू द पायरिमिडिन, मिथाइल डोपैन लिवोडोपा थ्रू द L amino acids, then angiotensin converting enzyme inhibitor enalapril via the small peptide carrier system. Then it is also important in the renal and biliary excretion of many drugs. GI lumen is there, membrane, blood, ड्रग होता है, ड्रग कैरियर सिस्टम होगा, ये कैरियर है, ये फ्री कैरियर है। यहाँ पे क्या है, ATP है, डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फ्री ड्रग फॉर्म करता है ब्लड में। यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, ATP, ADP और PI। ये जो है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मतलब इसमें क्या है, यूनिपोर्टर था ना, तो ये एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक मॉलिक्यूल या एक आयन या फिर एक या फिर मॉलिक्यूल जो है एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, तब उसे हम कहते हैं यूनिपोर्ट। वो जो होता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। सिम्पोर्ट में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों भी, मतलब यहाँ पे शोन किया है। एंटीपोर्ट में क्या होता है, एक डाउन की तरफ जा रहा है, एक अपर की तरफ जा रहा है, बोथ आर वर्किंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज़ द सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एंडोसाइटोसिस थर्ड, इसमें हमें पता ही है कि जो ड्रग्स ये वेसिकल्स फॉर्म करते हैं सेल के अंदर, तो ड्रग्स और कंपाउंड जो होते हैं ना, इसमें ज़रूरी नहीं होता कि वो एक्वेस सोल्यूशन में भी हो एब्जॉर्ब करने के लिए, टू गेट एब्जॉर्ब। Drug or compound does not have to be in aqueous solution in order to get absorbed. GI lumen में क्या आता है, मैक्रोमोलिक्यूल प्रोसेस ऑफ इनगल्फिंग होगा। मेम्ब्रेन में क्या है, वो वेसिकल जो वैक्यूल फॉर्म करेगा और वो ब्लड में फिर रिलीज हो जाएगा। सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये जनरली जो है एब्जॉर्ब्ड होता है लिम्फेटिक सर्कुलेशन में, और ये बाईपास करेगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। It bypasses the first pass hepatic metabolism. Then it is responsible for cellular uptake of macronutrients, like we can say fat, starch, and oil soluble vitamins like A, D, K, water soluble vitamin B12, vitamin B12, insulin. Phagocytosis is, we know that, cell eating. It is the absorptive uptake of solid particles. Pinocytosis, it is cell drinking, uptake of fluid solute. For example, sabin, polio vaccine, botulism toxin. Thank you. This is all about the mechanism.